Welcome to the NewsX Sunday Guardian Roundtable. Today we are taking a look at what is happening in Rajasthan, because that is really the next big state of political churn. What is happening between the BJP and the Congress, and also what is happening within both the parties, especially the Congress. Because as you know, Sachin Pilot has been raising the banner of revolt for a while now. Now they are saying that, at least people from his camp are saying that enough is enough. If his demands are not met, then he will probably leave the party, float his own party, and the deadline of sorts is also being given. Please note, this deadline has not been given by Pilot himself, but by people within his camp. They are saying that it's his father's death anniversary on 12th of June. So that would be a day where he may make some announcement if his demands are not met. On the other side, we have the Congress saying that efforts are being made. We have people doing some back channel talks. We are being briefed off the record that out of the 3 demands of Sachin, maybe one would be made as sort of a face saver. That, of course, the allegations of corruption into the Vasundhara Raje government. But is Ashok Gehlot also willing? Don't forget, Sachin is not the only player here. Ashok Gehlot is also there, and from all accounts, he is not ready to meet Sachin even halfway. So what is going to happen within the Congress is really of something that is burning all the headlines, at least in Delhi and I'm sure in Rajasthan. Adesh, since it's the world of Twitter and tweets, let us come with you for the breaking news. What exactly is happening in the camp Sachin and camp Gehlot? प्रिया, मैं आपसे पहले ही बोल रहा था, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस डिबेट को कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं ना कि मीटिंग पे मीटिंग। अच्छा, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जब जब दिल्ली में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी और खड़गे की बैठक होती है, उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी एक ट्रक में बैठ के चंडीगढ़ गए थे। तो उसके बाद एक वीडियो आया था कि राहुल गांधी जो है वो ट्रक ड्राइवर है उनकी उनकी जो प्रॉब्लम वो जानना चाहते हैं। उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक हुई थी। सचिन पायलट बाय रोड राजस्थान से उनसे मिलने के लिए आए थे। वो बैठक काफी लंबी चली थी, उसको लगभग 2 घंटे की बैठक थी। उसमें सचिन पायलट ने अपनी बातें कही कि जब भी अशोक गहलोत मेरे पे पर्सनल हमला करते हैं, मुझे हाईकमांड प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो उसमें उन्होंने जो उनके दिल में था वो सब बातें कही, और जो उनसे वायदे किए गए थे कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, उसके बाद आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सबको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में जो घटना घटी थी, जिसमें विधायकों ने और अशोक गहलोत ने विद्रोह कर दिया था, उसके बाद से अगर मैं देखूं तो अशोक गहलोत और ज्यादा पावरफुल हो गए इस खड़गे रिजीम में, जबकि खड़गे उनमें से एक ऑब्जर्वर थे जिनके खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो सचिन पायलट ने अपनी बातें कही और कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं कि मुझे आपको कहाँ एडजस्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार छोड़ चुका हूं, इस बार फिर से छोड़ देता हूं कि ठीक है, आप ये फैसला कर लीजिए। उसके बाद जब दिल्ली में 29 तारीख को ये बैठक हुई, जिसमें बुलाया गया अशोक गहलोत को। बेसिकली अशोक गहलोत इस बैठक में आना नहीं चाहते थे। 2 बार ऐसा हुआ कि ये बैठक कैंसिल करनी पड़ी, और फाइनली ये कहना पड़ा खड़गे जी को, जब ऊपर से ऑर्डर आए कि ये गहलोत साहब आप दिल्ली आ जाइए, नहीं तो एआईसीसी को जो फैसला करना है वो कर लेंगे। फाइनली अशोक गहलोत दिल्ली आए, लेकिन दोनों की बैठक अलग अलग हुई। 2 घंटे पहले अशोक गहलोत बैठे, उसके बाद 2 घंटे सचिन पायलट बैठे, और इनको बीच में बिठाया गया सिर्फ 2 मिनट के लिए। उस 2 मिनट में ही फोटो खींच ली गई और दिखाया गया कि देखिए कितनी एकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि दोनों साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद जो बाहर आके वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कहा कि दोनों साथ हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसमें भी दोनों नेता मीडिया से बातचीत करने के लिए राजी नहीं थे। इस बैठक में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि सचिन पायलट को ये नहीं बताया गया कि उनका क्या रोल फ्यूचर की पॉलिटिक्स में होने वाला है। राजस्थान रहेंगे, दिल्ली लाएंगे, क्या होगा। बस एक ही बात थी, चुनाव मिलकर लड़ना है, और राहुल गांधी ने कहा कि आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दी, मैं देख लूंगा। तो सचिन पायलट इस बैठक के बाद और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि 31 तक उन्होंने डेडलाइन दी थी कि अगर उनकी 3 मांगे नहीं मानी गई तो वो राजस्थान में आंदोलन करेंगे। तो अब कल फिर वेणुगोपाल के साथ उनकी मीटिंग हुई। वेणुगोपाल उसके बाद मिलने के लिए गए खड़गे से, कांग्रेस प्रेसिडेंट से, और अब उसका निष्कर्ष क्या निकला है कि उनको दिल्ली में रखा जाएगा या उनको राजस्थान ही रहेंगे। सचिन पायलट ने एक बात साफ साफ कह दी है कांग्रेस हाईकमांड को, नेतृत्व को, कि वो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। अब राजस्थान में उनके लिए क्या रोल बचता है? एक तो है कि उनको बनाया जाए स्टेट प्रेसिडेंट, जिसके लिए अशोक गहलोत राजी नहीं है। दूसरा बचता है कैंपेन कमेटी चीफ। तो कैंपेन कमेटी चीफ के पद को लेके काफी बार्गेन हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस लीडरशिप का एक तर्क है कि जब हिमाचल के चुनाव हो रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कैंपेन कमेटी चीफ थे, वो पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं थे, तो आप इस पद को हल्के में मत लीजिए। यानी कैंपेन कमेटी चीफ भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन सचिन के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे
कांग्रेस हाईकमांड इस बात का अनाउंस करे या पहले से इस बात को कहे कि अगर सरकार बनेगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और वो भी अशोक गहलोत। और कहा यह जाता है कांग्रेस के भीतर कि अशोक गहलोत ही असली कांग्रेस है। तो कल की बैठकों के बाद आज मुझे लगता है कि सचिन पायलट जयपुर पहुंच जाएंगे। कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है क्योंकि राहुल गांधी अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा कि सचिन पायलट, हाँ एक चीज और, जो तीन मांगे सचिन पायलट डिमांड्स। की हैं, डिमांड्स जो हैं, उनको लेके क्या हो। बेसिकली उनको लेके राहुल गांधी ने ये कहा था कि एक कमेटी आप फॉर्म कर दीजिए, जो कमेटी इन तीनों मांगों को लेकर अपना एक रिपोर्ट देगी, ताकि सचिन राइट। पायलट को भी उनकी भी एक फेस सेविंग हो सके जो उन्होंने जनता के बीच में वादा किया था। अशोक गहलोत दो बातों पे राजी हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग पे राजी हैं और मुआवजे पे राजी हैं कि इस पर कमेटी बन जाएगी, लेकिन वसुंधरा के खिलाफ करप्शन की जांच हो, इस बात पे वो कमेटी पे राजी नहीं है। ये इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट उन्होंने बचाई, और सचिन ने जो अपनी अनशन में या अपनी यात्रा में जो कहा, तो राजस्थान का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, हमें सिर्फ इतना पता है कि डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। प्रिया। थैंक यू फॉर दिस अपडेट आदेश, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया बिहाइंड द सीन्स व्हाट इज हैपनिंग। बट रशीद, वेयर डू यू टेक दिस फॉरवर्ड, बिकॉज आई आल्सो रेड योर स्टोरी वेयर यू हैड आल्सो स्पोकन केसी वेणुगोपाल मींस राहुल गांधी इज टॉकिंग टू सचिन पायलट, कुछ बैक चैनल प्रपोजल्स भी आए हैं। तो सचिन पायलट क्या लगता है, यू थिंक ही विल स्टे एंड मान जाएंगे, एंड व्हाट इज द फेस सेवर? यू नो, वी आदेश हैज गिवन अस सम ऑफ द talks that are Yeah, happening sure. there. Yes. In fact, I want to thank Adesh because he has given a very good kind of Comprehensive. overview. So I will not take much of your time. The two, three things emerge. A, that whatever Rahul Gandhi decides, it will be acceptable to all. But when will Rahul Gandhi decide? So there is a aspect of this party disciplines that Mr. Sachin Pilot has to observe. That he has to wait for Mr. Rahul Gandhi to come for things to crystallize. In that context, June 11 becomes sort of irrelevant. I mean, it will be a very solemn occasion for him, but not for the party, not for political this thing of politics of Rajasthan. Whether Mr. Sachin Pilot would abide, would pass this test, or we do not know. Second thing is about setting up committee panel, etc. This is little bizarre because after all, it's a Congress government. How can a chief minister refuse to accept a thing about Vasundhara Raje, who was a BJP chief minister? So this is, I think, that's where there is a test for Mr. Kharge and Mr. Rahul Gandhi. They cannot have a ostrich-like approach about this. So I think Sachin is on a very firm wicket. I don't see it happening. Very quickly, I would say that yesterday I had a conversation with Prashant Kishore, and he had said for last 2 years he has not indulged in any kind of political consultancy. This may be a posture, but for the record. And Sachin Pilot is also on record to say that a consultant with him are something known as political edge. It's a group of IITians, etc., who's been here, and this is in Congress party's knowledge. So this is also, I'm just adding, the spirit of that Adesh has set a tone. So I'm just advancing on that. Okay, so from what Rashid is saying, also Sachin, both Adesh and Rashid, Sachin Pilot quitting the party maybe those seems a bit. He's going to try and find his place within the party. Avinash, where do you see this happening, and do you agree with the other two? And where are Yeah, you? I Can you agree tell with. us where? I mean, I can see you're on ground in Rajasthan, but where are you? Well, I'm in a very small village, some 30 kilometers from Udaipur, called Bagurlava, and it's quite a place to visit. So I've been here since morning. I'm talking to people, and when you come this far, all the issues that we talk about become irrelevant. That's the People on hardly ground. care about. On ground, they hardly care about the big names and things, and even they hold as well. Now, coming back to this whole June 11th and Sachin Pilot forming a party, it's a story that has been going around for over 2.5 years now. Everybody knows the proposed name. Everybody knows this and that. Everybody knows everything other than when is the party going to be formed. And I agree with both Adesh and Rashid sir that I don't see any party being formed right now. Nothing is there to gain in forming a new party and breaking away. I think Sachin Pilot and all his conversations have made it very clear since July 2020 has been maintaining this that I'm not leaving the Congress party. I'm just raising my concerns that I have with the local leadership and the local issues. He says, I've got nothing against the Congress party, nothing against the High Command. I have some issues, and I think my party allows me to do that. So that has been his stand. He will stick to it. And it's a question more of Pilot or Gehlot. It's a question of the Congress High Command. How effective are they, or are they there or not?
That It's just now the fag end of this government. You have not been able to get two of your most important leaders to sit on a table and talk for 10 minutes. And you're talking about things like we'll get 156. So I think Congress High Command has got a lot of thinking to do. People in Rajasthan, I think, more or less have made their mind which way they want to swing. So all and these which way is that? posturing, well, we have been a pendulum state for last 5 elections, and I don't see that changing this year as well. Okay, so that means the Congress should just quickly set its house in order before it, No, ship is already. it should set its house in order to have a strong place in the opposition. At least they should have a number that matters. They should not be in a dismal position like last time, where they were barely reduced to 21. And they should look at it that, okay, even if we lose, do we have someone or a leader to take us through the next 5 years of, wilderness? If they don't have anything in order, they will be just gone down. And the fears are that they might become Gujarat. Last time they were on the brink of winning it. This time they've been wiped out. So you can't rule those possibilities out. And in the last 6 years, there have been talks around only these two politicians. No third person has been groomed who could be a stopgap arrangement for the Congress if nothing works out between the two. So I think Gehlot, I believe, is looking for a third person. If Pilot is not, but I don't think so. If he has not been able to accommodate the second person, third person is way too ahead. You were talking. Okay, on that note, and I like what Avinash had said on an earlier show, that the fight of Pilot is actually the central leadership that has let him down. So, it's not really Gehlot who promised him chief ministership, but the central leadership. So, Anilji, keeping all this in mind, आपको लगता है कि, from what we are hearing is that BJP does have the edge. So is it a win-win for Sachin Pilot to do this Anchan now? What does he get out of it? He's relevant in politics. He's also making a road for him post the elections, where if the Congress loses, then he is going to be the best bet for the Congress. So इसमें आपको लगता है कि सचिन की strategy सही है Anchan करना? Firstly, I'll differ with two of the guys, Adeshji and Avinashi. I'll come to the point straight. One is, how can you make Sachin Pilot a campaign committee chairman? What is going to speak there on the dais, from the dais? How is he going to address? Is he going to say Ashok Gehlot has done a wonderful work? Will he say so? A guy who had a rally in Jaipur and was talking against the government, can he do that? In politics, yes, everything is possible. But can he do that? What will happen to his supporters? How can he say Ashok Gehlot is a very good chief minister? All his policies are very good. How can he? Well, you can say Congress has done well and Sonia ki photo पीछे लगा के बोल सकते हैं. It does not work that way, ma'am, because here you are fighting on Ashok Gehlot policies. Point. That is for the public to decide. Now, how can he say that? That's my basic question. How can he say that? Point. Okay. Avinash, you want to come in? It's a good point. No. I agree with what Anilji is saying, but I doubt if I said that he would be the campaign committee chief. No, not you. No, Adesh. Okay. But sorry, yeah, it is. I'm sorry for my camera because it's going around. But I'll quickly want to make one more point. I've spoken to one of the former campaign committee chiefs of the Congress party in Rajasthan, and they say it's a glorious position where you just put in a good kurta and wait for the chief minister to give the orders. That is not going to happen with Sachin, है ना, Adesh? So if it is an incumbent chief minister, a campaign committee chief matters for the opposition, where you are projected, you have a campaign or you have got a lead. When you are within an incumbent government, that is just a glorified position, which is good for nothing. It's akin to the state president at the moment. Okay. Adesh, your thing is, what you may call it, muted. You'll have to unmute yourself. नीचे एक म्यूट पर हो गया. आवाज आ रही है? अब आ रही है. हाँ. जो अनिल जी ने कहा, दरअसल क्या है ना कि हमें इस डिबेट में बैठ के ये तय नहीं करना है कि कांग्रेस हाईकमांड क्या करने वाला. हम एक चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में जब ये बात आई कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या संभावनाएं सचिन पायलट को लेके बनती हैं, तो उसमें जो चर्चा चल रही है इनके भीतर कि केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट को क्या ऑफर दिया, सचिन पायलट ने उनसे क्या कहा, राहुल गांधी के बीच में क्या बातचीत हुई, हम उन बातों पे चर्चा कर रहे हैं. हमारे ये कहने से कि सचिन पायलट कैंपेन कमेटी चीफ बन जाएंगे या वो अध्यक्ष बन जाएंगे, वो तो नहीं होने वाला है. तो हमने उस बात को रिपोर्ट किया था अनिल जी, जो अभी तक इन बैठकों के दौर में निकल के बाहर आया है कि एक ऑफर उनको ये भी है कि आप कैंपेन कमेटी का चीफ बन जाइए अगर आप राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं. तो
दरअसल कांग्रेस हाईकमांड ये चाहता है कि वो फिलहाल के लिए उनको हम कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दें और वो दिल्ली आ जाए, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो और अशोक गहलोत चुनाव लड़े, रिजल्ट जो भी होंगे। एक और बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि जैसा अविनाश ने कहा कि एक ऐसा स्टेट है जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है। हाल ही के दिनों में एक सर्वे कांग्रेस ने कराया है और उनके मुताबिक इनकी 35 सीट्स आ रही हैं, उस सर्वे के मुताबिक, जो कि काफी राहुल गांधी के नजदीक माना जाता है। तो जिन्होंने वो करवाया है, तो ये जो बात निकल के आई थी कैंपेन कमेटी चीफ वाली, वो मेरा या रशीद जी का या अविनाश का ऑफर नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही एक चर्चा है। ओके, मेरा 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 इसके बारे में ये कहना है अनिल जी को। ठीक है अनिल, रशीद क्विकली, देन अनिल। हाँ यस रशीद यस, जी। देखिए मुझे लगता है प्रिया कि इसको जो कैंपेन कमेटी की बात है इसमें थोड़ा सा भ्रम भी फैला हुआ है। दरअसल जो मेरी जानकारी है वो सचिन पायलट को जो ऑफर हुआ है वो कैंपेन कमेटी का है, लेकिन वो कैंपेन कमेटी राष्ट्रीय स्तर पे है। एक राष्ट्रीय स्तर पे कैंपेन नेशनल कैंपेन कमेटी बनाई जा रही है, उसका एक महामंत्री होगा और वो प्रियंका गांधी और जो रणदीप सुरजेवाला वगैरह का भी नाम है, और उसमें सचिन पायलट भी हो सकते हैं अगर वो लोग उस पद को नहीं लेंगे। तो उस स्थिति में सचिन पायलट को ये बात कही जा रही है कि आप इसके बन जाए, और उसमें राजस्थान का चुनाव भी शामिल होगा, मध्य प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़ का भी, तमाम तेलंगाना का, और उसके बाद 24 का चुनाव होगा। तो आपकी भूमिका रहेगी राजस्थान में हम कमेटी बना देते हैं, जैसा अनिल जी कह रहे थे कि वहां एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। देखिए प्रिया, ये बड़ा एक और बड़ा भ्रम है कि अशोक गहलोत को कभी 18 में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। मुझे याद है राजस्थान पत्रिका अखबार की एक हेडलाइन याद है जिसमें मोहन प्रकाश जी जो थे, जो समय महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपने आप को मतलब मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होगी, और वो अशोक जी के बारे में उन्होंने उस समय कहा था। तो ये सारी की सारी पृष्ठभूमि है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रिया, कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है, ये नहीं समझा पा रही है कि वो कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार हो जाती है, भूपेश बघेल की सरकार हो जाती है, सिद्धारमैया की सरकार हो जाती है। कांग्रेस दरअसल वोटर जो है पंजाब में अमरिंदर सिंह की, लोग वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी को, आइडियोलॉजी के नाम पे देते हैं, हाथ पे मोहर लगाते हैं। तो ये सब चीजें भी राहुल गांधी अगर मजबूत है और उन्हें कोई सत्ता का लोभ या नहीं है, लालच नहीं है, तो उन्हें कांग्रेस की सुपरमेसी स्टैब्लिश करनी है कि देश आज उनको उस रूप में देख रहा है। Okay, I'm going to take a break and then I'm going to come back and ask Anil ji to respond to my second question. Okay, ye Anchan, is this a win-win for Sachin Pilot? What does he gain by doing a revolt or rebellion just 6 months before the elections? After a quick break. Hello and welcome back to Roundtable. Today here we are discussing the politics of Rajasthan, but more specifically the Pilot versus Gehlot feud. Anilji, before, what does Sachin Pilot gain really by doing this so close to the elections? He cannot go and form a new party. It's too late. So then what is he gaining for or hoping for? That is for Pilot and his supporters to understand. Basically, I always tell people, the people who are close to Pilot, his supporters, they are, I'll put it very straight. They are immature in politics. Basically, they are immature. And the kind of advices being given to him, either in Jaipur or in Delhi, are really bad. Now, you'll find two kind of guys in politics. I'll be very upfront in that. One who is being used by media, and other which media uses them. Pilot has fallen in trap of a media, where media is guiding him what to do next, how he's going to do it. So my take is basically his supporters are immature and they've caught him in a very bad situation. People talk, 1998, not 1998, election 2013, that he was promised CM's post after 2.5 years. You tell me one thing, if he was promised after 2.5 years, what made him to run to Manesar after 1.5 years? He should have waited for 2.5 years. And second point which comes to my mind is, why did he go to Manesar? He should have straight away gone to AICC, sat there with all his supporting MLAs, complained to Congress High Command. Why didn't he do it? So, loyalty becomes a very important question for Sachin Pilot in the party High Command. Is he loyal? Is he not loyal? Because he went to a place where Haryana police is guarding it. Okay, how to defend his loyalty now? He has to defend his loyalty. He has to prove his loyalty. See, that happened 2 years ago. Now, why is he doing this thing? Is he because he's been sidelined totally by Gehlot, so he wants to become relevant again? What is the game plan? You have to understand, Mr. Gehlot
was not there, even if he was assured CM's post. He has to fight with Mr. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and Sonia Gandhi. Right. Why Gehlot? I don't understand, because they promised him. Ashok Gehlot is not Yeah. going to stand up and say, yeah, you take my chair. He's not going to do that. Who does that? So he's fighting on the wrong, completely wrong basis. And Okay. there, what I say, the political immaturity comes in the fore. Rashid I know is the second thing that Avinashi said about, on the ground. quickly. I'll be very frank with you. I've moved around 2,000 kilometers. Rashidji said 35 seats. I can assure you today that Congress is much above that, because perception, Ashok Gehlot has changed the perception somewhat towards Congress. Who wins or who loses, I don't know during election, because elections are 6 months away. And if I'm allowed to quote, then I'll quote Harold Wilson again. Even a week is a long period in politics. So what are we talking about? What are we talking about? It wasn't Rashid. It was a Congress survey that said 35 seats. That's what I'm saying. So that's what I'm saying. Right now, survey will it stand there? What will be the permutation combination? Who is going to be BJP's face? Because BJP right now is in completely bad in a mess situation. also. Actually, yeah, we should discuss the BJP also. I'm going to call you all for that. Adesh, is it, this whole planning behind this latest thing, just 6 months before the elections, what does he gain from it, Adesh? नहीं, देखिए 2-3 सिनेरियो हैं कि एक तो वो कांग्रेस पार्टी में रहे जहां वो बने हुए हैं, जहां से उनका जीवन शुरू हुआ था। दूसरा बात आती है कि अपनी अपनी पार्टी बनाए, जैसा उनके कई नजदीकी लोग कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो यहाँ मिलने वाला नहीं है। दरअसल सचिन पायलट ये एश्योरेंस चाहते हैं कि जो अगर ठीक है अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लीडरशिप मुझे ये कह दे, पब्लिक में अनाउंस कर दे कि भाई जो भविष्य के नेता है वो सचिन पायलट है। तो उस बात को लेके ये संघर्ष चल रहा है, जो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लगातार, कल रात को भी हुई है, उससे पहले भी चल रही है। तो सचिन पायलट ये भरोसा चाहते हैं कि कम से कम मुझे आज नहीं तो भरोसे का लीडर तो अनाउंस कर दीजिए, भविष्य का लीडर अनाउंस कर दीजिए। तो उसको लेके जद्दोजहद चल रही है, लेकिन समस्या ये है कांग्रेस पार्टी के सामने कि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए कैसे सचिन पायलट को ये कहें कि ये हमारे फ्यूचर लीडर होंगे। तो इसके बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें देखिए हो क्या गया है दरअसल कि अशोक गहलोत ने अपने साथ एक बड़ी लॉबी दिल्ली में खड़ी कर ली है। अब उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, ये सब बड़े लोग हैं। अब सचिन पायलट की अगर आप बात करेंगे तो उनके साथ कौन है? कमलनाथ हैं, प्रियंका गांधी हैं, सुरजेवाला है, मानिक टैगोर हैं, अजय माकन है। तो ये बेसिकली कांग्रेस के भीतर की एक लड़ाई चल रही है। हमेशा मैं कहता हूं कि कांग्रेस में 2 बैच हैं, एक 1980 बैच है, एक 2000 बैच है। तो ये 1980 बैच वर्सेस 2000 की लड़ाई चल रही है। हाँ, जहां तक बात थी एवर यंग कमलनाथ इज इन 1980 बैच। वो एक एक्सेप्शन है सचिन पायलट के साथ। like 2000 बैच। नहीं, उनकी मजबूरी ये है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है मध्य प्रदेश का, और वहां पे लगभग 25 से 30 सीट ऐसी हैं जहाँ गुर्जर बहुल इलाका है, वहां उनमें सचिन पायलट की उनको मदद की जरूरत पड़े, और इनके रिश्ते वैसे भी अच्छे हैं दोनों के। तो ये एक एक्सेप्शन अगर मैं छोड़ दूं तो ये जो लॉबी का झगड़ा चल रहा है, तो इसीलिए हुआ क्या, सचिन पायलट ने अनशन किया 1 दिन का, और फिर यात्रा निकाली 5 दिन की। तो एक बड़ी लॉबी ये चाहती थी कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दो, लेकिन जो स्ट्रैटेजिस्ट थे उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जयराम रमेश ने लगभग एक जो नोटिस था उसको ड्राफ्ट कर लिया था, और वो उस पे खड़गे साहब के हस्ताक्षर चाहते थे, लेकिन एक दूसरे जनरल सेक्रेटरी ने उनको रोका और कहा कि ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सचिन पायलट बहन और भाई दोनों के फेवरेट है, और आपके ऊपर आरोप आएगा कि आपने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये बात है जब वो अनशन कर रहे थे उस दिन की। तो कुल मिला के बात ये है कि अब पार्टी से निष्कासित करने की बात तो चलेगी, क्योंकि उसमें एक तर्क है पायलट का, वो कहते हैं कि मैं वसुंधरा के करप्शन की बात कर रहा हूं, तो मुझे किस आधार पे आप पार्टी से बाहर निकालोगे। तो पायलट की लॉबी और गहलोत साहब की लॉबी, इनके बीच ये झगड़ा चल रहा है। कहां तक जाएगा, सचिन पायलट को कुछ प्रॉमिस करेंगे, वो इस बात से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ ठीक है, मेरे घर में मेरा मान सम्मान हो रहा है। अब पायलट ये कहते हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कम से कम मुझे अपने घर में मेरा मान सम्मान जो मेरा है वो मुझे लौटा दीजिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और ये जो खबरें आ रही हैं बार बार, उसको सचिन ने एक बार नहीं, मुझसे भी परसों बात हुई थी, कह रहे थे कि ये सब प्लांटेड स्टोरीज हैं, मैं कोई पार्टी फॉर्म करने नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई 2 लोबियों के बीच है जो दिल्ली में बैठी हुई है। कौन जीतेगा ये आने वाला समय बताएगा। So it's a proxy fight between the lobbies. That is a very interesting line that's come up. But Avinash, are you shaking your head? What is your take? See, it's not a proxy fight. Priya, I look at Rajasthan as a challenge of
something called the Congress Ala Kaman. You know, Anilji very rightfully said that Sachin was not right and he was naive and going to Manesar. But equally important is that if that was one self-goal scored by him, then what Mr. Gehlot's camp did on September 25 was an equal goal. So there are two people who have defined the high command, one each. So it's a one all score. And now they need to look at it, boss, we have to hold the present and we need to make a way for the future. They have to be pragmatic. My big thing is that can you just not be realistic? If you have some metal left in you, you got to tell the understandingly right that the chief minister is everything, but there is somebody above that. You know, there are many people, not just Sachin Pilot. If you move and talk to people who hold position, they say you feel very, what do I say, claustrophobic, that everything is with one person. You know, you are the chief minister, you are the home minister, you are the finance minister. The organization is in your kitty. You command all the facilities that, you know, your high command needs with a little. Now you have got 4 states to say, but till around 2-3 months back, there were just 2 states. So you were backing that. So many people, it's not just Pilot, talk to many others. Poor souls, they don't even get a recall name. I can tell you, if many of our Delhi experts are to be told, give 5 names from leaders who have hold a position in Rajasthan, they can't go beyond 3 or 4. So the Congress has a real dilemma. The Congress High Command has a dilemma. How do we stay relevant as the Congress party in Rajasthan? Leave aside election. Leave aside election. They don't have all the Jilla members on the house. You are doing a great Mehngai scheme. You are painting the front pages pink for the last 2.5 months. You know, the front page news has become irrelevant in Rajasthan because every day the government is on the front page with a glorious ad. All that is done, but do you have workers who can bring these labharthis to the polling booths? Do you have Jilla Adhyaksh? So the problem is not Sachin Pilot, Ashok Gehlot. The problem is the inactive Congress High Command. Do they want to stay relevant? Do they have a zeal to fight it in? Okay. Anilji, last word to you. Kya lagta hai that it will actually benefit Gehlot to end this instead of letting it carry on? You know, if some compromise is offered, should he not take it? Because he's the one who's going to lose. He is still the chief minister. If he loses the state, it will come on him. Priyaji, for the last almost 3.5 years, we've been, you know, all the guys have been talking about it. Sachin Pilot is an asset. Sachin Pilot is an asset. I also say Sachin Pilot is an asset. Why can't Congress High Command understand it? In the last 3.5 years, what they have done? The blame is solely on Congress High Command, frankly. What is happening in Rajasthan? I fully agree with Avinash. I've tweeted about it. When you look at these inflation relief camp or Mehngai Rahat camp, where are the ground forces? They are no ground force. Only thing which is affecting the Congress in Rajasthan is complete inactiveness of the BJP. Have you seen BJP hitting the roads? They have not. Have you seen BJP even, you know, organizing a rally kind of thing and speaking against the paper leaks? Not much, except for Pilot. So who is your opposing it? Only Pilot who is opposing it. BJP is nowhere to be seen. So I take this that the ground forces are not there, which are necessary. But saying that, I'll tell you one thing. Perception was very bad 6 months back. He has been able to make a change in that. How much? I don't know. But at the end of the day, it is really the ball is back in the Congress High Command's court. Avinash, you want to say something because we're totally out of time? No. One last thing. I agree with Anilji that perception is done. But perception is very limited thing. You know, this was one organization structure. If you go down, the incumbency or the kind of free hand that the MLAs have got and the kind of things that they are doing on the ground are hurting the Congress more. And Anilji was saying about the BJP, you know, whatever little I know of BJP, even if you visit the smallest of the camps, they have their karyakartas and people moving around. So their problem is the top layer is fighting, but the surface beneath is very well oiled. So when push comes to shove, they can run. प्रिया चुनाव के बाद अशोक जी का क्या है? कोई भी हारा हुआ मुख्यमंत्री कह देगा कि भाई हिसाब झुका दूं, कुनबा डूबा क्यों? मेरा ऐसा मानना है प्रिया कि कांग्रेस के पास एक बड़ा अच्छा
मौका था कि राजस्थान के इतिहास को बदल दें, क्योंकि इतनी इन फाइटिंग बीजेपी के अंदर भी है जो बाहर नजर नहीं आती। लेकिन उसके पीछे मैं कहूंगा कि जिम्मेदार सब है। और रही बात की इनके राहत कैंप और ये जो भी रिलीफ दे रहे हैं, मैंने एक बात देखी है राजनीति में कि जब जनता का मन बन जाता है ना, उसके बाद आप उनको जो मर्जी दे दो, वो पलटते नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हरियाणा है, यूपी की सरकार है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि उसके बाद उनका मन पलटता नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारे जो बाकी पैनलिस्ट बता रहे थे कि कुछ अलग होने वाला है, कांग्रेस की इन फाइटिंग के कारण मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा। Okay, on that note, thank you so much. We're going to keep watching the state of Rajasthan, and I think next time we'll discuss what is happening in the BJP, because all is also not well within the BJP. But for now, thank you for this conversation. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.